Just a minute. Let Hello. Yeah. Are we live? Yeah, yeah, we are live. Let me just once check it. Yeah, okay, we are live. Okay. Great. Firstly, so it's an honor to host this show, and thank you for being on Gurukul Dream Foundation Safarnama. Thank you. Thank you Thank you so much, so sir. much. It's my pleasure that you guys invited us me. Thank you so much for that. Sir, I hope आपकी फैमिली में सब अच्छा होगा. Without wasting your time, let's start with the interview. So, firstly, I would like you to introduce yourself, आपकी journey के बारे में, and आपका थोड़ा educational background. Perfect. So, do you want me to continue in Hindi or English? How you want to do Yeah, this? both. Hindi, Both. English. Yeah, mix up. So, to introduce myself, I myself is Dhruv. I'm Dhruv Jolly. I'm founder to a brand TapOnn. Right. So, first of all, let's introduce what TapOnn is. So, Yeah. TapOnn is a platform where we are introducing smarter and instant networking for all Hmm. professional hustlers. Right. Basically, we are replacing the traditional methods of paper visiting cards or brochures Hmm. or all the things where people are using papers to communicate or to share their information. We are trying to digitize that with our smart products and a smart app, Hmm. so where all the information now you can just share to anyone with just a tap, and Yeah. automatically on their phone everything, all your information will pop up on their phone, and Hmm. the recipient whatever information they want to use or Yeah. save or be connected, they can directly connect to you on any platform with just one click. So Oh, great. we are just trying our best to make the whole networking ecosystem more efficient, more effective, and more easy for everyone to connect Okay. with each other, to share their information hassle free. Hmm. Now, Great. if we talk about ourselves and my journey, Yeah. so I did my graduation from Indore itself, from Prestige, and Prestige. then for my further studies, I went to Australia in Sydney. So, from Okay. education point of view, I have my accounting masters in accounting. Hmm. So, I'm from education point of view, you can say that I'm an accountant. But Okay. accidentally we entered into an IT space where we started as a digital agency, Okay. not even agency. I started my career as a consultant, practically learned everything, and slowly and steadily, transformed from a consultant to agency, where we were Agent. handling 100 plus clients from Australia. My whole team was in India working around there. And while I was working into this industry, and I was the front face with all my clients, that's where I realized that there are multiple problems which these business owners are facing every day. So that is Hmm. where Right. something in my mind came up that Dhruv, let's start developing some products which is Products. uh, can make the life more easier, more better, or somehow it improves or bring more money to the business owners. So with that Great. vision, we came to India. We started working on product. COVID hit, everything Yeah. went on stop. During COVID also we didn't stop. We introduced a platform called Deliver for You. So where Okay. it was not a business platform, it was Hmm. moreover a platform to just to engage my team during COVID, Hmm. keep myself also busy, and at the same time we were able to help a lot of people around there, right? So in Hmm. Indore we did that Deliver for You, where it was a hyper local marketplace. We did deliveries to for Hmm. necessities and essential products during that COVID time. And once the lockdown Hmm. opened, and then I started into going into stealth mode, looking for more and more products or something where we can bring it out. Hmm. That is where we saw a gap, that visiting cards are of no use, not making an efficient way, Right. and eventually not serving the purpose also. So that is where we thought that there is a gap around there. We started working around there. It took Hmm. us around 1.5 year to get the whole technology, product, and everything. I won't say ready, but at least an MVP ready, so that at least we can MVP. get Yeah. started to the market, get the feedback, Hmm. and then bring on more and more customers around there. So this is Okay. where we are, and looking at the situation.
Yep. So, this is where we are right now at present. With Okay, TapOnn only, I got this opportunity that, I'm able to join this live session with you and interact with everyone. And yep, so that is what definitely, my sir. journey is. So basically you transform from a basic accounting degree to a entrepreneurial side of things. Yes, you can say that. ग्रेट सो आप ऑस्ट्रेलिया गए थे फॉर योर फर्दर स्टडीज देन वापस से इंडिया आने का डिसीजन लाइक बिकॉज ऑफ कोविड या आपका पहले से ही था कि यू विल गो फॉर स्टडीज ओनली देन यू विल कम बैक एंड नहीं, कंटिन्यू योर वर्क मेरा नहीं था, कभी भी नहीं था ऐसा। मेरा यही था हाँ कि सबसे पहले तो यही होता है, देखो अपन इंडियन लोग हैं, हाँ स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। सो सबसे पहले तो यही हाँ होता है यार कि जितने लगाए हैं उससे ट्रिपल तो लेकर आना ही आना है। लेके फिर आना कुछ सोचेंगे जो भी डेफिनेटली करना है, राइट। पर वाइल आई वाज स्टडिंग देयर, राइट, मेरी जॉब भी लग गई। एक और ग्रुप में आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन अकाउंटिंग क्लर्क। सो बेसिकली हाउ हाँ अकाउंटेंट्स हियर आर देयर, वहाँ पे वो अकाउंटिंग क्लर्क की पोर्टफोलियो ओके प्रोफाइल से जाना चाहते हैं। एंड हाँ देन आई रियलाइज कि यार, सो आई वाज गेटिंग अ वेरी गुड पैकेज, राइट। हाँ एंड यहीं पे मैंने एक सीए से बात कर रहा था, यहीं पे मेरा एक फ्रेंड है, उनसे हाँ बात कर रहा था। वो बोले क्या करता है? मैंने बुक कीपिंग करता हूँ मोस्टली। बोले क्या हम्म, पैकेज है? मैंने ये है। बोले भाई इतने में तो मैं मेरी पूरी टीम को साल भर चला लूँ। मतलब क्या बात कर रहे हो? तो बोले तुम्हारी कंपनी में कितने लोग हैं? हमने बोला 8 लोग हैं। मतलब सभी यही हाँ करते हैं। बोले क्या बात कर रहा है भाई? बोले और बुक कीपिंग तो इज वेरी इजी, क्या हम हाँ इसको ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लेकर आ सकते हैं? मतलब हाँ, प्लान कर सकते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत, मतलब जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, पढ़ाई के साथ साथ जॉब्स भी कर रहा था। सो हाँ एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड वन थिंग कि यार थोड़ा सा अपना ही काम करते हैं, मजा भी हम्म, आएगा, हो सकता है पैसा ज्यादा कमाए, पर एटलीस्ट राइट अपनी खुद की फ्रीडम होएगी। सो वही डेफिनेटली देखते हुए वी थॉट कि यार चलो लेट्स टेक अ स्टेप। सो वो थोड़ा सा एक लीप फेट करके मैंने स्टेप ले लिया था। आई रिजाइन द हाँ जॉब एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग कि हम अकाउंटिंग को कैसे लेकर आए। जब पता हम्म, चला कि यार इसमें घुसे, 5 एक महीने काम करा, जब उस पे पूरा सब हुआ तब पता चला यार कि यार ये तो सॉफ्टवेयर जो है, जैसे अपने इंडिया में टैली है, हाँ जीरो है, ये सब भी अब ऑटोमेशन पे आ चुके हैं। सो राइट आप वहां पे आपकी एंट्रीज डालो, वो अपने आप बुक कीपिंग करके दे देती है। हाँ तो मैंने को भी पता चला कि यार ये सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी कर रहे हैं इस पे काम, और ये साल भर में लॉन्च कर देंगे। आई एम लाइक कि हम्म, दिस इज नॉट अ फीजिबल बिजनेस, हम इतना पैसा लगाए, इतना स्टार्ट करें और फिर 1 साल में बंद हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। एंड डेफिनेटली स्पेशली जब हमारे कॉम्पिटिशन बड़े बड़े ऐप प्लेटफॉर्म्स और ये सब हो हाँ जाएंगे। तो अब जॉब तो छोड़ दी थी, खर्चा तो चलाना था। हाँ तो तब जो आईटी कंपनीज के साथ हम कांटेक्ट में थे इन प्रोडक्ट के लिए, तो उन्होंने बोला कि सर आप वहीं पे हो तो एक काम करो, आप मार्केटिंग करो, हाँ आप वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स लाओ, हम यहाँ पे करते हैं। सो वहां से ये हाँ जर्नी चालू हुई। अब वो करते ओके करते मैं एक ऐप पे काम कर रहा था जो इंडिया में लॉन्च होने वाली थी, उसका मैं मार्केटिंग ऑफिसर था। हाँ ओके। एंड जब मैंने उस पे काम करा, मतलब अक्टूबर 2019 से हमने इंडिया में उसकी मार्केटिंग करना चालू कर दी। हमको राइट तब इंडिया का मेरे को एक्चुअली पोटेंशियल समझ में आया, क्योंकि मोदी जी के ओके चक्कर, मोदी जी की हाँ बेनिफिट्स के लिए डिजिटल इंडिया हो चुका था। जियो के हाँ थ्रू सबके पास इंटरनेट था। इंटरनेट आ गया स्मार्टफोन था ओप्पो और इनके थ्रू इतने अवेलेबल और इतने इजीली अवेलेबल हो गए थे अफोर्डेबिलिटी में, कि एवरीवन वाज डूइंग दैट। और राइट हम आईटी में काम कर रहे थे। सो देन दैट्स हाँ द टाइम व्हेन आई सॉ कि यार बॉस, इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है। Right, in 3 months, we were able to get around 15,000 doctors registration. We got ओके them contacted. Everyone was very much interested in that product and all. तो वो एक था, तो मेरा यही था कि कुछ बनाते हैं अपन। वो हम्म प्लान करने में इंडिया आया, और उस टाइम पे ओके कोविड लग गया। कोविड तो अब ऑस्ट्रेलिया वाज द कंट्री जो 2 साल तक ओपन नहीं हुई थी। हाँ सो दैट इज वेयर वी गॉट स्टक। सो प्लान तो था कि इवेंचुअली इंडिया आ हाँ जाएंगे, पर ऐसे ऑल ऑफ अ सडन का प्लान नहीं था। और हम्म फिर अब जब आप इंडिया का काम देख रहे हो, और जब मैं रहा हूँ यहाँ 3 साल, तो आपको हाँ भी ये मान, मतलब मेरे को ये लगता है कि सर आने वाले 5 साल में ना सब इंडिया में ही रहेंगे, बल्कि बाहर से लोग डेफिनेटली इंडिया आएंगे। दैट इज द इंडिया आएंगे पोटेंशियल वी आर लुकिंग इन इंडिया राइट नाउ। The राइट kind of our youth is getting motivated towards digitalization, towards online working, consultancy, freelancers, whatever you say, and the money they are making, it's nothing. राइट It's like, it's absolutely amazing.
No one would have imagined that like a 21-year-old doing designing at home, that too sitting at a village, can earn 2-3 lakh rupees per month. So this is the Absolutely. scope of the real India, and this is just starting. So there is gonna be a lot of potentials around there. So yes, तो वैसे में आके इंडिया में आके हम अटक गए थे, और अब हाँ फिर हमने यही सोचा कि यार अब अपन प्रोडक्ट बनाने में लग गए हैं। वीजा जैसे 2022 दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया था, और जैसे मैंने हाँ आपको बताया कि टैप ऑन पे हम तब काम कर ही रहे थे, सॉरी 2021 में ही ओपन हो गया था, पर हाँ। टैप ऑन पे हम काम कर ही रहे थे। सो इट वाज वेरी हार्ड टू लीव एवरीथिंग इन मिडल एंड देन गो बैक देयर एंड देन स्टार्ट अगेन. So we राइट। thought, okay, let's just put this around here. Let's build the country, build the product from Indore and take it to global. So main vision तो वही है कि अब इंदौर को भी थोड़ा सा अपना रोशन राइट। करें. और नंबर वन स्मार्ट रिसेंटली सिटी इंदौर तो आ से जाए. वैसे भी बहुत बहुत स्टार्टअप इंदौर से बहुत राइज हो रहे हैं। कुछ तो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप, चाय सुट्टा बार, एमनी चाय वाले, ये तो इंदौर से ही ग्रो करे हैं। एग्जैक्टली. बल्कि वही है कि जैसे इंदौर में बहुत पोटेंशियल है, एंड पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ आईटी आल्सो. नाउ यू कैन सी हाँ। द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग एवरी डे. राइट। सो वही प्लान है कि हम इंदौर से ही प्रोडक्ट बनाएं. अभी भी हाँ। हमारा जो प्रोडक्ट है, इनके जो कार्ड्स है, दैट इज गोइंग पैन इंडिया. सो सो ये आप मेरे को इस बार इसकी वर्किंग बताएंगे कि कैसे काम करता है आपका टैप ऑन का स्मार्ट कार्ड, विजिटिंग कार्ड। मैं आपको समझाता हूँ, दिखाने के हाँ। बदले मैं आपको लाइव एग्जांपल ही देता हूँ. श्योर। तो देखो सर, ऐसे हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स है, हाँ। राइट. सो बहुत ही ओके। मिनिमल है, राइट. क्लस्टर्ड राइट। नहीं है ये हाँ। हमारा. अब ऐसे एक कॉइन भी होते हैं हमारे पास, हाँ। ओके। राइट. तो ये हमारा ऐप है, ये हमारा फोन है. हाँ। सामने वाले हाँ। बंदे को सिर्फ क्या करना है, इस पे आके ये टैप करना है. ओके। एक मिनट, इस पे आके ये टैप करना है, राइट. जैसे ही टैप करते हैं ठीक ऊपर है। नोटिफिकेशन आ जाता है. आ जाता है। जैसे ओके। ही इस नोटिफिकेशन पे क्लिक होता है, तो ऐसे सामने वाले की प्रोफाइल खुल जाती है, प्रोफाइल आ जाती है, ठीक है। राइट. सो अब आज की राइट। तारीख में, अब इसमें प्रॉब्लम में हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर आल्सो वर्किंग, राइट. यू हाँ। आल्सो रनिंग अ स्टार्टअप. अब राइट। आप किसी को भी अप्रोच करते हो, राइट. तो वो हम्म। आपसे पूछेगा कि जैन साहब आप एक काम कीजिए, आपका पोर्टफोलियो भेज दीजिए. आप एक हाँ। काम कीजिए, आपकी लिंक भेज दीजिए, सोशल मीडिया हाँ। लिंक्स और श्योर। वेबसाइट की लिंक्स और हाँ। तो क्या मल्टीपल लिंक्स हो जाती है. And हाँ। especially when we are doing a cold reach to the people, they हाँ। won't be interested to open all the links, राइट। right. उसी में आप ये देखिए, मेरी एक ही लिंक मैं शेयर करता हूँ लोगों को, और उस सारी पे अब चीजें। सारी डिटेल्स है. तो किसी को अगर राइट। मेरा, अब जैसे किसी को कनेक्ट करना है, अब जैसे लिंक्डइन पे हाँ। कनेक्ट करना है, तो ये हाँ। लिंक्डइन टैप करा, ऑटोमेटिकली मेरी ऐप पे जो लिंक्डइन है उस पे मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, प्रोफाइल खुल जाएगी, ग्रेट। राइट. ये सेम थिंग कैन हैपन विथ एवरीथिंग, लाइक से. हम्म। अब ये मैंने कनेक्ट विथ वी में करा, तो जैसे ही मैंने हाँ। एक मिनट जाओ, हाँ, जैसे ये कनेक्ट विथ ही करा, तो ये लोकल कॉन्टैक्ट्स खुल गए मेरे, कॉन्टेक्ट्स खुल गए, और ओके। सारी डिटेल्स यहीं पे आ गई. ओके। सो किसी भी बंदे को मैं कनेक्ट करता हूँ, तो इट्स वेरी इजी हाँ। फॉर देम टू सेव एनी डिटेल्स. अगर किसी को कुछ सेव नहीं करना, सिर्फ मेरे को सपोज करो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है. अभी क्या होता है, हाँ। व्हाट्सएप पे आप नंबर सेव भी कर लो, पर सेव कर। +91 आया तो भी प्रॉब्लम होती है. हाँ। तो राइट। इस पे क्या, ये मैंने व्हाट्सएप करा, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप खुल जाता है. डायरेक्ट ओपन हो ये जाएगा, देखिए ओके। डायरेक्ट ऑटोमेटिकली खुल गया, मैंने मैसेज हाँ। पे क्लिक करा और डायरेक्ट चैट ऑप्शन खुल गया. ओके। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क. तो सर, इसके तो लिए ही इसमें हमें, सामने वाले पे ऐप होना जरूरी है? नहीं, नहीं होना जरूरी है. यही सबसे सिर्फ। बड़ी अच्छी चीज है, सामने वाले पे ओके। सिर्फ एनएफसी से पावर्ड होता है हमारा कार्ड्स और प्रोडक्ट्स. हाँ। तो आज की हाँ। तारीख में हर एक लेटेस्ट फोन्स पे एनएफसी है, एनएफसी आ रहा है, मोस्टली राइट. आईफोन्स में है, आई गेस एंड्रॉइड में भी अब आने लगे हैं। एंड्रॉइड में सारे सैमसंग में है, ओप्पो और हाँ। वीवो में थोड़ा सा ट्रबल है उस पे, पर आने वाले टाइम में एनएफसी हर एक फोन में होएगा, हर एक फोन में बिकॉज आ जाएगा, राइट। दैट इज द फ्यूचर. हाँ। तो आज राइट। आईओटी भी जो आ रहा है, जो आपकी हाँ। मल्टीपल मशीन लर्निंग हो रही है, आपके ऑटोमेटेड आ रहे हैं, वो सब एनएफसी से पावर्ड रहेंगे, क्योंकि वो एनएफसी इज ओके। गोना प्ले दैट क्रूशियल रोल बिटवीन मोबाइल एंड दैट हाँ। हार्डवेयर. सो आप वो राइट। कंट्रोल कर सको. सो ये सब एनएफसी से ही आने वाला, तो आने वाले टाइम पे तो ये सब में होना ही है. और
जिसके पास एनएफसी नहीं होता है, तो हाँ ये मेरी ऐप है। ओके, ओके यहाँ पे मैं जाता हूँ शेयर बटन पे, तो हाँ आप देख रहे हो यूनिक लिंक है और एक क्यूआर कोड है। हाँ तो जिसके पास एनएफसी हाँ नहीं है उसको आप ये क्यूआर कोड भी स्कैन करवा सकते हो, यूनिक लिंक भी करा सकते हो। हमने क्यूआर ओके कोड में भी ठीक है सब चीजें दिए हुए हैं कि जैसे क्यूआर कोड में बंदा जाएगा, उसको चेंज कलर करना है, उसको जो भी करना है हाँ वो सब चीजें चेंज कर सकता है। यूनिक लिंक कार्ड दी पे हुई आ है, जाएगा सो क्यूआर राइट, लाइक से आज ओके अपन वर्चुअली बात कर रहे हैं, आई कैन हाँ डायरेक्टली शेयर माई लिंक टू यू राइट ऑन द चैट सेक्शन, ओके एंड आप ओपन हाँ करके भी कनेक्ट कर सकते हो। सो सामने ग्रेट वाले बंदे के फोन में ऐप होने की कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐप कंपलसरी नहीं है। राइट और इसमें क्या है कि एक कार्ड से ही काम हो जाएगा मतलब आपको वो देना राइट, नहीं है यू जस्ट हैव टू टैप एग्जैक्टली। तो वही है कि जहाँ अभी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉक्स आर हैपनिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल, सो वी हाँ जस्ट थॉट के व्हाई नॉट टू, व्हाइल वी आर डूइंग दिस, वी आर एक्चुअली रिप्लेसिंग पेपर विजिटिंग कार्ड, जो पेपर हम्म, जो ट्रेडिशनल कार्ड्स है जो कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हाँ थे, उसी के साथ साथ वो पेपर वेस्टेज भी तो कर रहे थे। राइट तो जैसे अब मैं इंडिया आया, तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के पूरे कम से कम 1000 2000 कार्ड्स थे जो मैंने प्रिंट करा के रखे थे, जो मेरे को लेके हाँ जाने थे। अब वो हम्म, यहीं पे है, उनमें ऑस्ट्रेलिया का नंबर है मेरा, तो वो मेरे कोई हाँ काम का नहीं है। काम के लिए राइट डिलीवर फॉर यू के हमने पैम्पलेट्स बनाए थे, डिलीवर फॉर यू 3 महीने हाँ में हमने क्लोज डाउन कर दिया लॉकडाउन खुलते से ही। तो हाँ उसके पैम्पलेट्स कोई काम के नहीं है। राइट एट द सेम टाइम सो आई सॉ दैट कि आप मान लीजिए कि यार मैंने ये देखा कि यार 70 80 हज़ार रुपए तो मेरे यही पड़े हुए हैं, हाँ जिनको मैं कुछ कर भी नहीं सकता। या यूज भी Right? नहीं कर और वो सकते पेपर कार्ड से उनको कुछ भी नहीं कर सकता मैं। एट द सेम टाइम मेरे को एक और डब्बा मिला जिसमें जो नेटवर्किंग कर रहे थे मिल रहे थे, तो पूरे हाँ डब्बे में दूसरों के विजिटिंग कार्ड्स मिले। मतलब हाँ ये तो और बड़ी ट्रबल है। अब ये इनके जैसे मेरे पास जैसे मेरे कार्ड्स है, ऐसे इनके उनके पास जैसे भी मेरे होंगे पास इनके कार्ड्स है, इनके पास भी बहुत सारे कार्ड्स होंगे जो कोई काम के ही नहीं हाँ आ रहे। काम के लिए तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ करें। तो अभी जैसे ये जो मटेरियल्स है ये पीवीसी रिसाइकल्ड मटेरियल से बनते हैं। ओके तो ये क्या हो गया कि आपको अब 1000 कार्ड्स नहीं चाहिए, आपको एक ही कार्ड बनवाना है। तो हाँ राइट एटलीस्ट विथ आवर स्टेप यू आर सेविंग 999 कार्ड्स वर्थ ऑफ पेपर, राइट। एंड राइट प्लस ये आपके पास ही रहेगा, तो आपका हाँ कार्ड कहीं नहीं जा रहा, आपका कनेक्शन जाता है। कनेक्शन जा रहा है राइट सो राइट, यू रेज्ड अ फंडिंग राउंड जैसे मैंने आपकी लिंक्डइन राइट। चेक किया था तो आपने स्टार्टिंग में फंडिंग ले ली थी लाइक एमवीपी के बाद या आपने थोड़े रेवेन्यूज आए थे फिर फंडिंग ली थी एंड आप वो रूट पे कैसे गए कि फंडिंग कैसे मिली कहाँ से क्या इन्वेस्टर थे बहुत हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, क्रिटिकल। मतलब हमारा थोड़ा सा आउट ऑफ द वे पे ये फंडिंग का पूरा सेशन हुआ, ओके राइट। वेयर नाम 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 कैसे बताऊं मैं। तो ये तो हमको फंडिंग लास्ट ईयर ही मिल गई थी, व्हेन वी वर हाँ जस्ट प्लानिंग द थिंग्स, ओके राइट। सो रेवेन्यू तो अभी अभी चालू हुआ है हमारा, ये हमको लास्ट ईयर से ही मिल गई थी। इट्स जस्ट दैट के हाँ पेपर वर्क्स में डिले हो गए थे, तो इसके लिए अब वो न्यूज आउट हुई है। but the funding was ओके out in the last year only. So this guy who have joined us, we won't call him as an investor. We will in fact call him as an advisor. He is ओके more like a partner and advisor to us. Hello? या यू आर ऑडिबल Yeah. So he is more like a partner and advisor to us. So he's based in US. When he saw my LinkedIn post and also he just हाँ reached out to me, Dhurv, what are you working? So ओके he was an ex-client to me, right? Where ओके when running my agency, we used to handle his a part of business which was based in Australia. We used to market for them. So he ओके knew our work and all. So he just reached out to us normally that what is happening, what are you going, how's India, how's family. So I told him that this is what we are doing, and I just really got a very exciting product where we are working around, and this is what we ओके are working for. So that's where he thought, "Ki Dhruv, just send me something." So I sent him हाँ the a PPT which we made, and that so the PPT was also very raw. Like honestly, we didn't had any plan of raising a funding so early. We had a plan या that now is the right situation. Like today, present situation was our future plan that once we या start doing it 3 months after operation, we will start going for that. But he was like, no, Dhruv, this looks very good. Let's build it together. I also want to be a ओके part of it. And I know him. So the whole reason
for getting him on board. Money was a factor, definitely. I won't deny that. But the more reason is that, okay, he's a good advisor to us. He Okay. is a person who himself have run 3 4 startups and Hmm. made it to millions of dollars. Okay, so Okay. we know his business ethics, his business mindset, and everything. So we Hmm. actually got him on board so that we can learn from him. Great. We avoid doing Great. some mistakes which all normally happens in Hmm. startups. So that's the whole reason to get him on board. And you raised how much? Like, So if you can we disclose. raised around Yeah. 150, like say you can say 1.3 cr or 1 Okay. 1.5 cr, you can say, in total. 1.35 CR. Okay. As seed money, Yeah, you can say it's a pre-seed money. pre-seed money. And you are Yeah. now pre-revenue, or the revenues are coming? The revenues are coming. So we were a Revenues. pre-revenue also, like before the launch itself. We did a Okay. testing with the people. We had a website with a form and a payment link attached to it. Yeah. So we got, so before we had our actual orders going around, we had around 100 200 orders before that only. And now we are initially again starting picking up the sales and all. ओके सर फॉर एग्जांपल आपने मुझे अपना कार्ड सेल किया ये जैसे एनएफसी कार्ड एनएफसी एनिमल कार्ड तो इसमें कुछ रिटेनर अमाउंट भी रहता है कि मुझे एनुअली फीस पे करनी पड़ेगी No, या so वन that's the टाइम best रहता है part. It's just one time. वन टाइम और हाँ हाउ मच जी. डज हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर वन So, कार्ड we have different cards around here, right? हाँ So, to give you a brief, like say the card which I showed you, this is a हाँ metallic card which we're gonna launch it soon. Okay. हाँ The another card which we, so there's another PVC card which is custom made. Okay, so which ओके can be designed and done as according to your choice. ओके Okay, so that costs you around 1750 to 1800. Okay, that ओके includes GST, shipping, and everything. Sometimes the shipping charges fluctuate, so it's 1750 to 1800. There is another card which is a basic card, so which comes with ओके different gradient colors with a tap-on branding. You can only add your own name and नेम designation on it, right? So that ओके costs around 1250 rupees, or yeah, 1250 rupees. Then a socket like this, it will cost you या around 1000 rupees, 999. Then we have a pop दिस इज socket. फॉर व्हाट Same work. You just tap it around. सेम वर्क ओके टैप इट Yeah. ओके ओके So we just, and another, there's a socket which also gets stuck here. So that also works. ओके That comes around 1250 to 1300 rupees. So these all are one time cost, comes with ओके a 2 years warranty. Right. So any damage or anything happens, we will exchange it without any question asked. And our ओके app is absolutely free to use. Great. So what are your future plans? Like with Tap On? Like tap on, so see, our future plan is one thing where we want to create tap on as a central smart ecosystem for all professionals, right? So we want to make it as the networking ecosystem around for all the Hmm. professionals and everything who use our link for so like say, as I showed you, there's a link gets generated, right? So soon there will be a custom link option also coming around, Hmm. so you can use Okay. that custom link for your LinkedIn bios and all. We have smart products already, so we're Hmm. gonna launch a lot of new features like multiple profiles, integrate payments, and all those things, get compliance Okay. done from CHGPR. So future plan vision is that only, that we have to create the smartest networking ecosystem around the globe for all our users. How to Great. implement it? So we work on a very good strategy, which is customer feedback strategy. Okay. So all our team, we make sure that all the heads of the team every day spend at least 30 to 40 minutes in calling our Hmm. customers, getting a feedback from there. Okay. Obviously, everyone calls That's different the set of best people, part. but not just one customer gets called from four Huh. people. Everyone have their own list, and they all calls them, get a feedback from them, and as we get the feedbacks, we keep on churning the product. So Okay. we have some data points, we have some pipelines in our mind, but those pipelines, instead of planning by ourselves, we get some we draw some questions regarding those pipelines,
put that questions out in front with our customers only, because at the end Hmm. it's not us who is going to use it, right? It's you guys, it's the Right. customers who's going to use it. So the more features which they actually want, if we have that, Hmm. the better usability it can be. Great. So Great, sir. that is what we are doing. Great, sir. So one last question. Like, what is Yeah. your advice to the budding entrepreneurs? Like, if they want to start something of their own. Wow, that's today's a good day. I think a lot. I'm getting this question from a lot of times now. Today is the third time I'm gonna answer the same question. So, Yeah. um, for budding entrepreneurs, see, I will tell you one thing which I learned from my mistakes. Obviously, I myself is a budding entrepreneur, so I don't think so I am at that position to give advice to anyone. But Right. one thing which I realized, which a lot of my founders friends are also doing or were doing, but then we consulted them, is that people think that we are a startup, we are at a very early stage, we will do everything by Hmm. ourselves. Eventually, that ends up in a big loss or a big fail or a big stop for people, right? So first thing Right. first should be that the founders should make themselves very free and try to bring a lot of pillars in the company. Try to set up the Okay. team from the day they think that okay, now the revenue is coming, let's bring some people. Because Like the you know delegation should start from starting day. exactly, Delegation because and building the systems and processes. Yeah. yes, because the more the work you keep on your head, the more busy you will be working in the business. In fact, Right. when it comes to scalability and operations, you have to work on the business, not inside the Awesome. business. You Right. have to work, be an overview, and then you should have dedicated people. Also, now when what I realize is that first I used to take interviews and I used to just ask questions which was under my knowledge. And those Hmm. people who used to answer that, I used to hire them. Now with Okay. TapOnn, we have changed the scene. We ask Hmm. questions whose answers we also don't know. Okay. So the Great. person who knows more than us, we hire them, because This eventually if this is good. they have as equivalent knowledge as we have or even less than that, they're not going to do much good to us, Hmm. because what they're going to do, even we can do that. So you as a Right. founder will always be thinking that did I made a right decision, ये काम तो मैं भी कर सकता था, ये काम के लिए मैंने इनको Hmm. हायर क्यों करा. But if you bring smarter people, they will do things which Hmm. you can't which you can't imagine also. And Right. that's the time you will think that yes, this is the right thing. So that Okay. is what I believe. Second thing, there are a lot of people who talks about problems and startups and everything. Hmm. I believe it's not the problem, bro. It's the journey, right? And say अगर मेरे स्टार्टअप की जर्नी में प्रॉब्लम्स नहीं होएगी, तो जब Hmm. 1 साल के बाद मेरे को गुरुकुल फाउंडेशन बुलाएगा वापस से कि सर आप आओ, तो मैं कुछ स्टोरी थोड़ा ना बता पाऊंगा. Right. Right. So It's there all should about be the problems. journey. Right. There should be Hmm. problems. There should be new struggles every day. Right. Hmm. But it's just that we should be inclined to our vision and just take it as another challenge, take it as a new day and keep solving it Hmm. out. स्टार्टअप्स में ये होता Right. है कि आपने आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है, आपको कल नई Hmm. प्रॉब्लम आ जाएगी. राइट. Absolutely. आपने कल एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, आपको परसों नहीं आ जाएगी. राइट. तो जैसे Hmm. हमारे उसमें था, पहले हमारी ऐप में थोड़े बग्स आए, हमने वो सॉल्व करी, फिर Ha. वेबसाइट पे आ गए. वेबसाइट पे Hmm. बग्स आए, वो सॉल्व करा, हमारा ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया. ऐड Hmm. पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने लगी, तो दूसरा कोई प्रॉब्लम आ गया. सो दीज थिंग्स Right. कीप्स ऑन हैपनिंग. एंड इफ यू Hmm. मेक योर हार्ट वेरी शॉर्टन ऑन टू दैट, और इफ यू फील लो यार कि यार कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या हो रहा है, देन इट Hmm. वोंट हैपन. Then it would be better that we people do job where there is no Right. problems. You work 9 to 5, Hmm. everything is set. You go home 31st first ko you get your salary. So startups mein Absolutely. I think so. The only two things which I can say is that start investing in team, get Hmm. those people who are smarter than you so that can bring more action around there. And second point is that don't get low when there's a problem happen or where there is an obstacle or any barrier happen, you go below the targeted thing or anything happens, just take it as a new day, a new challenge, solve it around, next day again wait for a new challenge. And if there Great. is no challenge, that means the work is not happening.
Right, right? If your absolutely. team So comes and says that, okay, sir, everything is going good, perfect, मजेदार हो रहा है, that means nothing is going. nothing Because is fine. हम नया Absolutely, काम sir. कर रहे हैं, अगर Hmm. हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, तो हम Hmm. कुछ काम नहीं कर रहे, राइट? हम वही कुछ ओल्ड काम स्कूल नहीं कर टाइप कर, रहे. Right, right. Problems यस. are sign that we are growing. Which one? Problems are signs that we are growing as a company, as an individual too. यार एग्जैक्टली, लाइक आप खुद देखो ना, जब अपन ग्रो कर रहे थे, अपन सोचते थे 12th पास होएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर कॉलेज आ गया, कॉलेज खत्म हुआ, फिर नहीं. बोले कि नौकरी कर लो, प्रॉब्लम हो जाएगी, नौकरी कर ली, Hmm. फिर भी प्रॉब्लम, फिर बोले शादी कर लो, प्रॉब्लम खत्म. तो अपनी खुद की लाइफ में भी तो प्रॉब्लम्स आती जाती है, अपन क्या हार के घर पे थोड़ा ना बैठे जाते हैं. Right. We keep on Hmm. solving that, right? प्री बोर्ड्स आए, प्री बोर्ड सॉल्व करा, फिर कॉलेज गए, कॉलेज के एग्जाम्स दिए, आपने वहां पे Hmm. चैलेंजेस आए. तो द सेम थिंग इज अबाउट स्टार्टअप ऑल्सो, कि यू आर बिल्डिंग इट आउट, एंड Absolutely. स्पेशली व्हेन So यू आर I बिल्डिंग post. समथिंग. Yeah. हाँ जी, Hmm. बोलिए, आप कुछ बोल रहे हो. Yeah, yeah. Say, continue. Continue, continue. So same, like like again, वही problem की बात है, and especially in our industry, which is a tech Hmm. industry, where you are building something new, right? So at that time, problems will be there. Customers will be there who will, Hmm. disappoint you, who will make you feel low, who will point out, who will taunt you. But remember that when you grow, when you succeed, those are the same customers who's gonna come at the first and say कि हम इनके पहले customers थे, हम इनके साथ तब से जुड़े हैं जब ये एक छोटे Right. से ऑफिस में काम करते थे. तो एंड दो स्टोरीज हम हर बार देखते हैं. Absolutely. Absolutely, sir. So yeah, So also, yes. I So I, personally feel that your website is so good looking. Like I am from a, yeah. Am I audible to you? yeah, you audible na, tell na. Okay, huh. I personally feel your website, TapOnn website is too good looking. Actually, I am also from tech background, so I know designing, little bit of designing and programming and all. So I feel it is like, हाँ ऐसे देख के लगता है कि हाँ genuine website है. All the action, CT, call to action buttons and everything. So like kudos to the team, tech team. Thank you so much. Again, like, it's the whole team who are doing it. I'm just taking the advantage of being the face and founder, but honestly, it's not my effort. It's the whole team of efforts who does that. All the work goes from there. All the planning goes from there. आजकल तो ऐसा हो गया है कि they Hmm. don't come for me to the approval also. वो खुद से ही डाल देते हैं. So all the kudos goes to the team who's behind this and making the building the tap on around here. Definitely. Thank you Hmm. so much for joining in. It was a really Thank you good and so much. informative session. Thank, Thank you, thank you, thank you thank you for so having much. me with you guys. Okay, bye bye. Bye bye.